এই মুহূর্তে সংসদে বাকবিতণ্ডা আলোচনা সব চলছে ওয়াকফ বিল নিয়ে। ওয়াকফ বিল পেশ হয়েছে আর তা নিয়ে 8 ঘন্টা আলোচনা। সে 8 ঘন্টা আলোচনার শেষে ভোটাভুটি। তবে লোকসভায় যা সংখ্যা রয়েছে বিজেপির, তাতে খুব একটা সমস্যা হবে না বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এই ওয়াকফ বিল পাসে। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। कमेटी के जो सुझाव थे ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई? On behalf of All India Trinamool Congress, under the leadership of the Mamata Banerjee, I strongly oppose the bill in entirety. The spirit of my speech is, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा. The Muslim have constitutional right to manage its own affairs in the matter of religion because Waqf property belongs to Allah. The purpose of the bill is a clear breach of the right of the Muslims to perform their religion duty. The bill hits basic structure of the constitution. Parliament is now encroaching upon the power of the state legislation in deciding the question of the land and building of the Waqf. Thus, it is completely unconstitutional and divorce the Article 246 sub-Article 3 of the Constitution of India. Waqf properties form the backbone of the Muslim communities. Equitable access is not there in case of the Muslim. That is the reason we are opposing. This attempt is basically taking away the rights of the Muslim. Practicing Islam for at least 5 years is a precondition for making Waqf is thoroughly unreasonable. Under the scheme of the Constitution of India, no person can be compelled to practice his own religion. You are trying to take away the basic reason of all the judgments of the Supreme Court. This is not correct and this is bad. আর এই বিল নিয়ে আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম না করে বিজেপিকে আক্রমণ বিভেদের রাজনীতির। My parliament members also, they are fighting for Waqf today because the Jumla party is only one point program to divide the country and they believe only divide and rule policy, what we don't. আমাদের কনস্টিটিউশন আমরা মানি। আগে কনস্টিটিউশনকে শ্রদ্ধা করো, তারপরে কারো অধিকার কেড়ো।